communication. So again, I welcome you all in the fourth semester in the subject of analog communication. Okay. So why the attendance is low? Is there any reason? Okay. So let it be. So first of all, I want to share with you the syllabus of this communication. Where is that? Are you able to see it? The syllabus of analog communication. Yes, sir. So in this very subject, you have to go through the very basic techniques which are used for the communication system, whatever we are observing. And we can see that in our day-to-day life, we are using a number of numerous instruments which are used for the purpose of communication. Okay. So in this course, in this subject, we have to study the basic techniques from which the modulation is done. Okay, so you can see that the very first module, the very first module is dedicated for the introduction of this whole communication system. That is the very basic block diagram of communication system, the electromagnetic spectrum. Okay, and then the necessity of modulation. Yes, here the necessity of modulation, then the types of modulation. Okay, so we have to study, basically we have to study AM, FM and PM. Okay. Then there is some noise types. So we already know that in several cases, in case of mobile communication or in satellite communication or in television or radio, you can see that there are at some time there are some noises as there. Okay, so we have to see the basics about that noise part, the noise temperature. Okay, so due to that noise, there is some temperature generated within the circuitry. Okay, so the noise and the amplifiers. Okay, so next module, the module 2 is dedicated for the first modulation technique which we have to study is the AM, that is amplitude modulation. Okay, so all of these amplitude modulation and angle modulation, these are all the continuous time modulations, continuous modulation schemes are these. Okay, so we have to go through this. So we have to study the amplitude modulation and its types. So what we have to actually study in these modules are that how we can generate the amplitude modulation and how we can detect the amplitude modulation. So there are two things, the generation and detection. So always the generation will be done on the transmitter side and the detection is done on the receiver side. Okay. So here Tx is representing the transmitter and Rx is representing the receiver. Okay, so there will always be two things. One is the transmitter and another is the receiver. Okay, Hamesha. So there is an antenna and here is also an antenna. So here this is the transmitter side and this is the receiver side. Okay, so we have to see that how this modulation are done. So we will see that what modulation is basically. Okay, so
here at the transmitter side, we do the generation part, and on the receiver side, we do the detection part. Okay. So here we have to see the several things regarding this. Then we have to see the block diagram of, okay, so DSBFC, what are these things? We will see all these things. What is SSB, single sideband modulation, generation and detection methods. Okay. So we will see all these topics one by one. Next module, the module 3 is dedicated for angle modulation here. Okay. So this is also a continuous time modulation, continuous wave modulation. So in this case, angle modulation is divided into two parts, that is FM and PM. Okay, so we have to see this and its detection and generation detection. Next is dedicated for pulse modulation. Okay, so now we are going towards the digital modulation. Okay, so before getting the digital signal, we have to go through some pulse type of things. Okay, so we have to see some pulse modulation techniques as PAM and TDM, FDM. Okay. Next, the last module, the fifth module is dedicated for the digital modulation schemes. Okay. So in digital modulation scheme, we have to study some basic modulation schemes are there. And here we also have to study AM and FM receiver. Okay. So this is a very important topic. And the textbooks, you can see here that some textbooks are given, as well as there are some reference books are given in your syllabus. So George Kennedy, this is, all of these are foreign writer's book. So yes, this book, the last one, fifth one, R.P. Singh and S.D. Sapre. You can follow this book also. You can, so this Simon Hacking, Proakis and Kennedy. So you can follow any of the book, but if you want to follow the Indian writer's book, then you can go for S.D. Sapre, R.P. Singh, as well as Sanjay Sharma. Okay. Sanjay Sharma. And there are so many reference books also. So I think there is no need to go all these things. But if you want to go through these books also, then obviously you can. Okay, so this is the whole about the syllabus of the analog communication, which we have to go through. Okay. Now, okay, let me share one more material with you. So are you able to see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So we have to see this analog communication. Okay. So what does this means? This word. What is meant by this word? Anybody? By yourself? What do you mean by that? If you heard this word, then what do you mean by this word? Any general meaning which comes in your mind when you see this word? Sir, communication is a process through which we can express our ideas, information, thoughts to one person to another person. Okay, very good. Anybody else? Anybody else? Sumit?
Yogesh? Sir, it is a process of sharing ideas, information, techniques, skills, etc. Okay. So communication जब हम बात करते हैं, so simply communication means what? हमारे पास एक मोबाइल फोन है, सभी के पास है आई थिंक. तो जब सभी के सर, पास, वेटिंग लिस्ट में कोई है, ज्वाइन कर लीजिए। वेटिंग लिस्ट में कौन है? यहाँ तो नहीं शो कर रहा है. यहाँ तो शो नहीं कर रहा है कि वेटिंग लिस्ट में कोई है. नहीं, यहाँ कोई शो नहीं हो रहा है. Okay, so now let us see this picture. Yes. Now what you can see here. What you can see here. Communication. So the first picture is showing that a lady is talking with a man, and here she is using a simple cord phone, and here there is a cordless phone, or you can say that a mobile phone, and there is a system which is used to transmit the signal from one place to another place. And in the second case, you can see that a number of persons are observing on television. Okay, a TV is here, and what is going on here? There is some video recording is going on, and that is getting transmitted. So here it is the transmitter. Okay, so here you can see that the signal is transmitting to this whatever the system is. This is known as antenna. A big antenna is there, and this is again transmitting the signal to this receiver, okay, or this television. In the next case, you can see that there is a wireless access point, and this wireless access point is connected with a system that is connected with a number of systems, whether it is a desktop or any other device. There is a wireline network. You can see here, there is a wireline network, but in this case, there is a wireless computer. Okay, so the device which are used for connecting to the internet is impinged within this computer. So what this whole picture is showing, this is just showing the communication. Communication means what? That simply the transmitting signal from one place to another place. So that may be any other type of communication. So communication और किस तरीके का हो सकता है? In terms of torchlight, can it be used as for the purpose of communication? Torch. Yes, anybody? क्या टॉर्च कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है? No, sir. टॉर्च जानते हो ना क्या होता है? नहीं जानते हो क्या कोई? Yes, sir. ओके, सिर्फ प्रियंका जानती है कि टॉर्च क्या होता है. हो सकता है सर। हो सकता है. ओके, सो टॉर्च हो सकता है कम्युनिकेशन का एक तरीका. मतलब टॉर्च से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. कैसे हो सकता है? सो ये बेसिकली सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए क्या हम कह सकते हैं, मान लें कि या फिर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, या अभी हाल फिलहाल ही कौन सा मूवी आया था, पुष्पा, है ना? तो उस मूवी में आप लोगों को देखा होगा
कि जब वो लकड़ी चुरा रहे होते हैं तो पेड़ पर कुछ लोग बैठे होते हैं, वो सीटी बजाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So that is one of the type of communication also, कि उन्होंने एक इंडिकेशन दिया और उन्हें पता चल गया कि there is some persons over there who is coming. So communication जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, but nowadays we are so अभी पहले क्या होता था that कबूतर के थ्रू भी मैसेजेस ट्रांसफर किए जाते थे, so that is also a type of communication, है ना? So but here we are interested in communicating our messages through some technical things, through some wireless or some wired devices. Okay, let us move further. So this is the syllabus again. Okay, now you can see that there is a very basic block diagram for the purpose of communication. So what is the first block which is shown over here? What is this first block? Yes, the very raw material for communication, the purpose of communication is what? The input message. So there should be a message which we have to transmit from the transmitter to the receiver. Okay, but before that there are a number of blocks over there through which the message has to pass through. Okay, so the very first block जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, this is nothing but input transducer. So what is the meaning of transducer? Can anybody tell me? What is the purpose of transducer? It changes one form of energy into another form. Yes, anybody else? Anybody else? So जो input message है वो basically किस form में हो सकता है? Which type of signal? Sound. Yes. Yogesh? Yes, sir. Sound energy के form में. Okay, sound हो सकता है. The first input signal may be sound signal. Anything else? Anything else? So electrical signal. Okay, electrical signal. Anything else? आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो मोबाइल जब इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर क्या क्या चीजें आप भेजते हो? अपनी आवाज भेजते हो, उसके अलावा isn't it? Isn't it? Yes, sir. So these are the things basically which we generally use, है ना? या इसके अलावा हम यहाँ पर और जोड़ दें, so these are the basic things which we generally use for our input message or the our raw material which we want to transmit to the other place. And now अब हम जानते हैं कि अगर ये मे बी उसे वायरलेस फॉर्म में लाने के पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होता है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में. सो बिफोर दैट, सो वॉट एवर दिस सिग्नल्स ये जिस भी फॉर्म में हो, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू electrical signal. Okay, and this will get all of these types of energy. So these signals can be converted into some another form of the signal which is in analog form. Okay, so most of the input messages are which are available with us is in the form of analog or digital signal. So yes, जो हम बेसिकली जो भी सिग्नल्स नेचर में देख रहे हैं, सो बेसिकली ये क्या है, एनालॉग सिग्नल्स हैं या डिजिटल सिग्नल्स हैं?
मैं जो बोल रहा हूँ ये एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है? सर डिजिटल। मैं जो बोल रहा हूँ वो डिजिटल सिग्नल है। आशीष, okay, so how sound moves from one place to another place? How sound moves from one place to another place? Which type of signal? The sound is which type of signal? सर एनालॉग। क्या हुआ, अभी एनालॉग हो गया डिजिटल से? आप जो बोल रहे हो उसे आप महसूस करो कि आप जो बोल रहे हो, आपके सामने कोई बंदा बैठा है, वो कैसे सुन पा रहा है आपकी आवाज को? क्या होता है नेचर में, क्या होता है जब हम किसी के सामने बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, तो आवाज एक से दूसरे के पास कैसे पहुंचती है? सर वेव के फॉर्म में। वेव के फॉर्म में पहुंचती है। सो इन दैट केस what is there is some particles in the nature which get vibration. इनमें वाइब्रेशन होता है एंड दैट वाइब्रेशन क्या करता है, वो हमारे कानों तक पहुंचता है और कान के अंदर जो फिलामेंट है वो वाइब्रेट करता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हियर दैट साउंड। ओके, सो whatever the case may be, whenever we talk with each other, sound produces, and that sound moves in the form of a wave, and this is an analog signal, not the digital signal. Okay, so what is the difference between analog and digital? सर एनालॉग 0-1 होता है सर, और डिजिटल में वेरी करता है ग्राफ के साथ। एनालॉग में 0-1 होता है और डिजिटल में वेरी करता है। सर एनालॉग में आउटपुट फिक्स रहता है। Yes, पॉइंटर के थ्रू होता है। yes, please tell once again. सर हम लोग एनालॉग में सर जो आउटपुट इंफॉर्मेशन होता है वो पॉइंटर के थ्रू शो होता है, और जो डिजिटल होता है उसमें डिजिट के थ्रू शो होता है। और सर एनालॉग में एरर होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। Okay, एनालॉग में एरर होने का चांसेस ज्यादा रहता है और डिजिटल में okay, so you are telling about the analog and digital measuring devices. यस सर। Okay, I am asking about what is the difference between analog signal and digital signal? सर एनालॉग फिक्स रहता है सर, और डिजिटल वेरी करता है। एनालॉग फिक्स रहता है और डिजिटल वेरी करता है। ओके, अब ये बताओ कि ये एनालॉग सिग्नल, ये मैं एक सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है? एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है? Which type of signal is Analog, sir. this? Is an analog signal. आशीष, सर रिपीट कीजिएगा सर क्वेश्चन। ये जो मैंने सिग्नल यहाँ ड्रॉ किया है, ये एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है? एनालॉग सर। एनालॉग सिग्नल है। तो ये मान लें ये टाइम का एक्सिस है और ये एम्पलीट्यूड का एक्सिस है। ओके, सो आशीष मुझे बताओगे कि क्या टाइम के साथ इसमें वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? आशीष, सर हमको लग रहा है ना सर, ये एनालॉग नहीं है सर। अच्छा, ये एनालॉग नहीं है। योगेश, Yes, sir. ये एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है? Analog, sir. वाई? So ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है। टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो एनालॉग सिग्नल को हम कैसे पहचानते हैं कि टाइम के साथ वो वेरी होना चाहिए, है ना? तो मान लें यहाँ तक
ये जो टाइम, ओके लेट मी चेंज द कलर। मान लें ये टाइम यहाँ तक, दिस इज टाइम t1, यहाँ ये टाइम t2, दिस टाइम इज t3, दिस टाइम इज t4, this time is t5. Okay, so now we can see that at this point, at this time the amplitude is this much, at this time amplitude is this much, at this time amplitude is maximum, and again the amplitude is decreasing as time passes. So from point 0 to t2, from point 0 to t2, how many values of this signal are there? From 0 to t2, how many values of this signal are there? Are you getting my question? 0 से t2 तक इस सिग्नल के कितने वैल्यूज हैं? Yes, any idea, any guess? Infinite. Infinite. Anybody else? 0 से पॉजिटिव लेकर, नेगेटिव सर। ओके 0 से लेकर t2 तक टोटल कितने सारे वैल्यूज होंगे इस सिग्नल के? तो आप क्या बोल, आपने क्या कहा आशीष? सर पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज। ओके यस, ये मान लें कि ये टाइम एक्सिस है, तो यहाँ से ऊपर का जो वैल्यू है ये मे बी सम पॉजिटिव वैल्यू है, ये सम नेगेटिव वैल्यू है। ओके माना हमने, बट कितने सारे वैल्यूज हैं, संख्या क्या होगी उसकी 0 से लेकर t2 तक में? Infinite sir. ओके योगेश ने इनफाइनाइट कहा, ठीक है। और किसी ने, और कोई क्या कह सकते हैं? पूर्णिमा, प्रियंका? Yes, sir. Yes, how many values are there between the time period 0 to t2? Sir, infinite, sir. Infinite. Yes. So हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं आशीष? From 0 से t2, 0 से t2 तक में इस सिग्नल के हर एक टाइम पीरियड पर, यहाँ 0 से लेकर t2 सेकंड के बीच, मान लीजिए टाइम सेकंड में अगर दिया हुआ है, तो 0 से t2 सेकंड के बीच क्या होगा? इस सिग्नल का हर एक पीरियड ऑफ टाइम पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकता है। जैसे एक लाइन को बनाने में कितने, लाइन कैसे बनता है मुझे कोई बताएंगे? सर 2 पॉइंट्स है सर। Points. 2 पॉइंट से लाइन बन जाता है। Sir, infinite number of points. Infinite points, sir. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जब हम यहाँ पर ऐसा बहुत सारा पॉइंट जब हम ऐड करते हैं, तब जाकर एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करना हो, एक लाइन सेगमेंट कह लें, नॉट लाइन, लाइन सेगमेंट। अगर एक लाइन सेगमेंट बोलें, सो दिस लाइन सेगमेंट इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना? तो यहाँ पर भी ये एक कंटिन्यूअस सिग्नल है। दिस इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल है, इसीलिए इसके हर एक टाइम पीरियड पे, मतलब 0 से t2 के बीच इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वैल्यूज होंगे इस पर्टिकुलर सिग्नल के, ठीक है ना? सो दिस इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल। एंड व्हाट अबाउट डिजिटल सिग्नल? Sir, non-continuous. नॉन कंटिन्यूअस कहने का क्या मतलब है? Sir, मतलब So it has sir, fixed values. हाँ, Yes, this will have a fixed value, some discrete value. जैसे यहाँ पर जो values था वो पहले वाले केस में कंटिन्यूअस सिग्नल के केस में जो values थे वो बहुत सारे values थे। यहाँ पर एक अलग value है, यहाँ 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 एक अलग वैल्यू है, यहाँ अलग वैल्यू, यहाँ अलग वैल्यू, यहाँ सभी जगह अलग अलग वैल्यू है मैक्सिमम। और यहाँ पर क्या है, डिजिटल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं। सो
जो हम जनरल भाषा या जनरल जो कॉन्सेप्शन है हमारा, हम डिजिटल मानते हैं सिर्फ 0 और 1 के टर्म्स में. So we will have only two values, that is whether it is 0 or it is 1, or in other case we can assume it in some other case as either +1 or -1. Okay, so this is discretized. तो मैंने डिफरेंस क्या पूछा था कि डिजिटल सिग्नल और कंटिन्यूअस सिग्नल में डिफरेंस क्या है. सो डिजिटल सिग्नल इज व्हाट? डिजिटल सिग्नल इज सम फिक्स्ड वैल्यूज आर देयर. आशीष, आपने जो कहा था दैट इज जस्ट अपोजिट. डिजिटल में वेरिएशन कम होता है और एनालॉग में वेरिएशन ही वेरिएशन होता है. ठीक है ना? सो कंटिन्यूअस सिग्नल में क्या होगा? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन two time periods, but in the case of digital there will be only two values if we are interested about the binary system. Okay, so if we are taking as a binary system, then in that case we will have only two values, that is 0 and 1. So okay, so this is the very basic difference. Okay, so next we can see that, so हम यहाँ पर कैसे पहुंचे थे? We will have some signal that we have to okay, so हम analog signal से यहाँ तक पहुंचे. Next, first block is the input transducer. Next, यहाँ पर जो signal आया, you can see that it is termed as the input signal. Okay, so whatever the input message was there, that is converted using some transducer to some another energy form, that is the input signal. Then there is a transmitter. Okay, so this transmitter here, you have shown that there is a transmitter block is there only, but this transmitter may have a different blocks over within itself. Okay, so transmitter के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. Next, there is a transmitted signal. So अभी next transmitter होगा. Now this transmitter will be used to transmit the signal. Now अभी हमारे पास एक ट्रांसमीटर है और दूसरे साइड एक रिसीवर है. ठीक है? Now this transmitter and receiver may be connected with some dedicated path or सो डेडिकेटेड पाथ का मतलब क्या होता है? अब जो चैनल है, यहाँ पर आप देख रहे हो चैनल, जो चैनल वाला पार्ट है. नाउ दिस चैनल में भी वायरलेस चैनल और डेडिकेटेड चैनल, मतलब एक फिजिकल चैनल भी हो सकता है या फिर एक वायरलेस चैनल भी हो सकता है. सो ये जो चैनल है, दिस चैनल इज द पोर्शन वेयर मोस्ट ऑफ द नॉइज विल बी गेट इंट्रोड्यूस्ड विद इन द सिग्नल. सो जो भी सिग्नल ट्रांसमिट किया गया, दिस सिग्नल विल पास थ्रू अ चैनल बिफोर रीचिंग टू द रिसीवर. ओके, so and this is the place where most of the noise will get introduced with the signal. क्यों? क्योंकि वो चैनल, उस चैनल से होकर मे भी बहुत सारे सिग्नल्स क्रॉस कर रहे हो. so there may be an interconnection between them, as well as there will be some internal noise. Okay, so you can see that this is the box where the noise is shown, that distortion and noise is get introduced with the channel, and the signal is reached through the receiver where the signal is received. Next, this receiver will convert that signal into the signal which we want. Okay, now this is passed through, again there will be an output transducer. So हमारा communication का purpose क्या है? communication का जो basic purpose है कि जो यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट हुआ वही मैसेज यहाँ पर रिसीव होना चाहिए. तो जितना ज़्यादा सही मैसेज मिलेगा, जितना ज़्यादा करेक्ट सिग्नल मिलेगा, दैट विल बी द good communication system. Okay, so here the output message which we have is passed through the output transducer. So जिस फॉर्म में सिग्नल यहाँ पर पहले हमने ट्रांसमिट किया था, that same form is received by using the output transducer. So this is the very basic block diagram which will be asked in your university exam. So this question is generally asked in university exam, that explain the basic block diagram for the communication system. Okay, so
So let us move further. Next. So here we have to see the electromagnetic spectrum, which is basically used for the purpose of communication, then the modulation, then what is the need of modulation and types of modulation, then noise. Okay. So let us move further. Yes. So here, what you can see that there is an electromagnetic spectrum. What is meant by this electromagnetic spectrum? Anybody? So what you can see here, that you can see here the, okay, so यहाँ पर आप जो देख रहे हो, what you can observe from this signal, that what is increasing here, the The frequency frequency increases. or the amplitude or the phase, whatever it is. The frequency. Frequency. So frequency, if the frequency is increases, then what is whether, Wavelength decreases. yes. So what we are observing here, that the frequency is increasing. So if the frequency will increase, the wavelength, which is represented by lambda, will get decreased. Okay. So here frequency is increasing and the wavelength is decreasing. So as the session is getting over, so please rejoin for 10 more minutes. Okay, so what you can see that there is a radiation type with wavelength in a meter. Okay, so in the first case, there is a radio wave and it is represented in terms of what? 10 to the power 3. What is this 10 to the power 3? Wavelength. Yes, this is the wavelength. So what is the SI unit of wavelength? What is the Lambda. lambda is the notation. Lambda is the notation.